वेलकम टू द चैनल गाइस। टुडे आज हम करने वाले हैं वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर आपको चार चीज़ दी हुई है, बेस ईयर एंड करंट ईयर, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेस ईयर को आपको कंसीडर करना है ऑलवेज P0 और करंट ईयर को आप कंसीडर करते हो Q0। सो आई विल जस्ट राइट द वैल्यू फॉर P। तो P0 का वैल्यू आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। वी जस्ट राइट डाउन 20, 10, 40, 30 और Q0 दैट इज 9, 5, 8, 4। अभी आपको यहाँ करंट ईयर है, करंट ईयर के प्राइस को आप P1 और क्वांटिटी को Q1 कंसीडर करोगे। सो प्राइस P1 दैट विल बी 30, 50, 10, 20 and Q1 will be 4, 5, 2, 1. Now what is the Walsh price index number formula? P1 into under root of Q0 Q1 and sigma P0 into under root of Q0 Q1 into 100. Okay, so now let us find out the values over here. So first we will find out, सब में पहला you need to find Q0 into Q1. Q0 into Q1, let us multiply over here. Q0 is this one and Q1 is this one. So 9 times 4 will give you 36. 5 times 5 will give you 25. 8 times 2 will give you 16 and 4 times 1 will give you 4. उसके बाद you need to find out the under root of Q0 Q1, that is the square root of this. 36 का square root is 6, 25 का square root is 5, 16 का square root is 4 and 4 का square root is 2. Okay, let me add one more column here. Okay, now after that you need to find the two main things over here, so we will write down here. पहला आपको निकालना है, you need to multiply by P1. P1 under root of Q0 Q1. So P1 is this one, P1, and under root of Q0 Q1. So multiplying 30 into 6, 6 3 is 18, so it will be 180. 50 into 5, that will be 5 5 is 25, so this will be 250. And then 10 into 4, that will be 40. And then 20 into 2, that will be again 40. Okay, now you need to find out P0 under root of Q0 Q1. तो यहाँ पर P0 is this and multiply by Q0 Q1. So 20 multiplied by 6, 6 2s are 12, so this will be 120. 10 times 5, that will be 50. 40 times 40 times 4, so that will be 44 the 160. And 30 times 2, that will be 60. Okay, so let us add them now. 10 and this is 390. So this can be called as the total of sigma P1 under root Q0 Q1, and this is the total of sigma P0 under root Q0 Q1. Okay, this is the total. Now directly we will substitute in the formula. So according to this the formula is P1 under root Q0 Q1. So इसका total है 510 divided by 390 into 100. So you can cancel this 0 and this 0. Okay, so now we are left with 510 into 10 divided by 39. So that will be 5100 divided by 39. So let us कैल्सी अगर आपको अलाउड है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, कैल्सी अलाउड नहीं है. 510 divided by 39, 39 times 1 will be 39. So just subtract this. So 11 minus 9 will be 2, 4 minus 3 will be 1. So now you got 0. Now we'll check with I guess 39 times 3. 39 times 3 will give you 117. 39 times 3 is 117. 120 में से 117 जाएगा तो 3 बचेगा, right? So now what you can do and put a 0. तो ये 30 हो गया, अभी भी नहीं आ रहा है. So 39 0 the 0, again you get 30. So you'll make it a point है तो और एक 0 लगा दो तो 300 हो गया. So we can take 39 times the, we can take 39, 9 times 7 is 273. 300 में से 273 को अगर हम माइनस करेंगे, 300 minus 273, so you're getting 27. So point है तो 0 ले लो, you're getting 270. So 39 times 5 we will check. 39 times 5, 195, and 39
टाइम्स 7 विल गिव यू 273, तो 39 टाइम्स 6 ही होगा, ठीक है। तो विल कीप इट ईयर टिल ईयर ओनली, तो यू आर गेटिंग 13.076 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट जो है एक नंबर आगे चले जाएगा, राइट। तो ये 13.07 है, तो यू take this point one number आगे because multiply by 10, so the final answer will be 130.76. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझने आया। सो दिस इज प्रोफेसर अशरफ साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।